हाय बच्चों, आप लोगों को नीट फिजिक्स मेड इजी यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 5.5 न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मोमेंटम डिस्कस किया है हम लोग। आज न्यूटन से सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ डिस्कस कर रहा है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes the direction of applied force, So this is the statement of second law. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes the direction of applied force, ठीक है। तो यही है स्टेटमेंट। सपोज a force is applied on a body, suppose F is applied for a time interval of delta t on the mass of m, so इसका velocity v suppose, so यहाँ ये v plus delta v हो गया, the velocity change from v to v plus delta v, ठीक है। So the momentum will change, the change in momentum will be delta p is equal to m delta v हो जाएगा। अगर ये वेक्टोरियल नोटेशन में ले लेंगे तो ये वेक्टोरियल नोटेशन में ऐसा होगा, ठीक है। So v became v plus delta v. So what is the definition of second law? What is the statement of second law? F is proportional to delta p by delta t. Okay, this is the statement. So अगर proportionality निकालेंगे तो F is equal to k into delta p by delta t. ठीक है। Now if we apply delta t tends to 0, F bar is equal to k into delta p. Limit delta t tends to 0, delta p by delta t, then this will become k into dp by dt. This is the equation it will become, ठीक है। So on a mass m, if a force is applied for an interval of delta t, the change in velocity is from v to v plus delta v, then change in momentum will be delta p is equal to m into delta v, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है तो ये भी कर सकते हो, p1 is equal to mv and p2 is equal to m into v plus delta v लिख सकते हो। तो p2 minus p1 हो जाएगा, p2 minus p1 ये कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। तो द चेंज इन मोमेंटम इज मास टाइम्स ऑफ डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। सो F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t। प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाल दिया तो इक्वालिटी ले लेंगे तो सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे। तो सपोज अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 in a small interval, means that interval tends to 0, then delta t tends to 0, delta p by delta t will become differential coefficient. So F is equal to k into dp by dt. Okay.
So now what we can say is, if for a fixed mass, if m is constant, then dp by dt is equal to d of mv by dt. M is constant, so m into dv by dt. This is equal to m into a. Okay. So dp by dt is equal to m into a हो गया है. ठीक है. Acceleration direction will be p direction will be there, a direction, a also vectorial quantity. ठीक है. तो ये हो गया. अगर m constant है तो this is correct. If m is not constant, fixed mass नहीं है तो ये correct नहीं है. ये भी ध्यान में रख लीजिएगा. ठीक है. Now we will apply this. F is equal to k dp by dt. This is equal to k into ma. So proportionality constant can be taken any value. So for simplicity, if force define नहीं किया है, इसलिए k को हम assume कर सकते हैं. k is equal to अगर 1 ले लेंगे तो force का unit क्या है? If the acceleration of the body is 1 meter per second square of 1 kg, that is known as 1 unit of force. So SI unit of force कितना है? SI unit of force is 1 Newton. Small letters से लिखना पड़ेगा Newton. So Newton का मतलब kg meter per second square is the unit. और else Newton भी बोल सकते हो उसको. ठीक है. डायमेंशंस को करने के लिए समय पे kg meter per second square लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. ये है. So now we can write F is equal to ma. ठीक है. तो इस इक्वेशन का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन. न्यूटन सेकंड लॉ अभी मैथमेटिकली F is equal to ma we can write. In first case F is equal to 0 है तो a is equal to 0 हो जाएगा. Because m cannot be 0, so a is equal to 0. This is consistent with first law. Consistent है with first law. ठीक है. So this is the first point I am writing. First law. This is consistent. So external force 0 है तो acceleration 0. अगर acceleration 0 है तो net force 0. ठीक है. तो second case क्या बोला था हम लोगों को? तो this is an vectorial equation you can replace with equivalent. So in component form, this is vector form. ठीक है. ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का इक्वेशन. अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो Fx is equal to max, Fy is equal to may, Fz is equal to maz लिख सकते हो. ठीक है. So component form में Fx is equal to max, Fy is equal to may. max को ऐसा भी लिख सकते हैं dpx by dt. Similarly dpy by dt. may Fz is equal to maz और dpz by dt. ठीक है. ये component form में तीन equations हो जाएगा, equivalent to 3 equations. 1 dimensional है तो एक equation यूज करेंगे, 2 dimensional है तो 2 equation यूज करेंगे, अगर 3 dimensional है तो 3 equations यूज करेंगे. ठीक है. तो ये ध्यान में रख लीजिएगा. इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं जनरली. एक्स वाई जेड का एफ का वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कोई भी पूछ रहा है. ठीक है. तो मास भी देता है, तो ये नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है. तो अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ये पार्टिकल के लिए हमने बताया, एक ही पार्टिकल लेके बताया था. सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी दिस इज एप्लीकेबल, बट देयर इट विल बी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है. फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो.
ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगा। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, कहीं भी अगर बॉडी यहाँ है तो कहीं भी जा रहा तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एफ बोले तो एफ एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये बोले तो एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज ए लोकल रिलेशन, मीन्स इंस्टेंटेनियस ओनली, at that particular point only it is applicable, not everywhere. This doesn't depend on the history of this, previous का क्या है, आगे भी क्या होगा ये भी नहीं है, at this instant of time only you are interested and this relation is applicable at that particular instant of time. Force is at that particular instant, acceleration is at that particular instant of time, ठीक है। Acceleration may be in this direction, may be in this direction also. At that particular instant of time, the resultant acceleration, resultant force ये भी बोल सकते हो, ठीक है, तो net relation भी बोल सकते हैं। These are the 4 points we are interested. Next is, in this particular topic 5.5 only, impulse is there. Impulse. What is impulse or impulsive force क्या है? Suppose if we are hitting a ball with a bat, in a short duration of time, so it will change its momentum, okay, so you can write the average force, so F is equal to delta P by delta T you can write, so F into delta T can be written as delta P, change in momentum, this is known as F into delta T is known as impulse, okay. This is I is equal to F into delta T. This is the average force basically. So for finding the force and the duration of the time is very small here. Force is maximum, small time interval, large force and small time interval. But we can measure the change in momentum in this rather than finding the time interval or something like that. So this will be equal to change in momentum also. Impulse. Change in momentum. Okay. Impulse is also a vector quantity. ठीक है. So this you should remember. Suppose if you are having a graph between f versus time, whatever may be the graph, the area under the curve will represent in this time interval is I. I is equal to ft. Area under the curve. Impulse also. Force versus time graph दिया तो area under the curve is nothing but impulse, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। इससे 5.5 न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।